Now, Yes, sir. so climate, in the very first thing what we are learning, heat. Okay. First we are Heat. learning about heat. Second we are learning about dry. माने हीट ज्यादा होगा तो क्या हो जाता? ड्राई हो जाता ड्राई हो जाता. इसके बाद में क्लाइमेट है. क्लाइमेट भी क्या है? दिस इज द वर्लपूल. दिस इज द वर्लपूल. माने ये क्या है? साइक्लोन्स. ये साइक्लोन्स का भी इंपॉर्टेंट कौन है? सन. सन इज बिहाइंड दिस ऑल साइक्लोन्स. और डिप्रेशंस बोलते हैं इसको. और डिप्रेशन. ठीक है. और ये क्या है? व्हाट आर दोस? ये क्या है? वोल्केनो. नॉट वॉल्केनो. ये वोल्केनो. क्या है? कैन समवन से व्हाट इज दिस? Wildlife fire. Forest burning. फॉरेस्ट फायर्स और वाइल्ड फायर्स. फॉरेस्ट फायर्स और वाइल्ड फायर्स. ठीक है. फॉरेस्ट फायर्स और वाइल्ड फायर्स. अब ये क्या है? Glaciers. ग्लेशियर्स. ठीक है. सो अपन in climate what we are talking about? What you are talking about? Heat, that is sun. Then sun से जो effect होता ना, dry होता, then you will get the cyclones. Then you are talking about the forest fires, and we are talking about the glaciers. ये क्या है? We are in the poles. We are in the poles. Here tropics. ये क्या है? And all these are in the maritime. समझ में आ रहा? Clear? Climate में क्या क्या पढ़ेंगे अपन? What we are going to study in the climate? What are we going to study in the climate? Heat, dry, cyclone, wildlife fire, and glaciers. The climate majorly. First one, heat. Second one, dry. Third one, साइक्लोन और डिप्रेशन. cyclones or डिप्रेशन. depression. Fourth one, forest or forest fires. Fire. ये ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा हो रहा. ठीक है. फिफ्थ वन, glaciers. Glaciers. This one we are talking about glaciers. ठीक है. Now the second one we can say dry soil. Dry. Soil का अलग चैप्टर ही है, but we'll just check it. तो समझ में आया क्लाइमेट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? This is the fourth chapter we are in the geography session. ठीक है. Now going to the next slide. Should I move to the next slide? यस सर. Yeah. Okay. Let us start. I want Shima to read, please. Shima है उधर अब? Yes, sir. Okay, please read. Climate क्या है? What is climate? Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time. For a large period of Weather time. refers to the state. एक मिनट. For large period of time माने उसका ब्रैकेट में दिया हुआ है. It is given More the than 30 years. more than 30 years. Climate is equal to sum total. Sum माने we are talking about plus sum total of weather conditions. अब अपने पास जो एक हफ्ते से पानी आ रहा हो, वेदर है या क्लाइमेट है? क्लाइमेट इज Weather, sir. Conditions and variations over a large area and a long period of time is known as climate. ये क्या है? ये पूरों का मिला के क्या होना है? क्लाइमेट के कंडीशंस क्या है? लार्ज एरिया रहना, लार्ज एरिया एंड लॉन्ग पीरियड. लार्ज एरिया एंड लॉन्ग पीरियड. ठीक है. तो कितना होना लॉन्ग पीरियड?
greater than or equal to 30 years. तो क्लाइमेट माने क्या याद रखना आपको? क्लाइमेट इज द large area, long period, greater than 30 years. greater than 30 years. और क्या है? सम टोटल ऑफ वेदर. फिर से पूछ रहा हूं आपको, ये जो अपने एक हफ्ते से देख रहे जो पानी पड़ रहा हो, क्लाइमेट है या वेदर है? Weather. Weather. वेदर. क्यों वेदर है? वेदर क्यों है? क्या ये लार्ज एरिया में है ये, या पूरे इंडिया में कवर हो रहा, या सिर्फ एक छोटा हिस्सा कवर हो रहा? छोटा हिस्सा. छोटा हिस्सा कवर हो रहा. और क्या है? मोर देन 30 ईयर्स है. 3 दिन भी नहीं हुआ बराबर पानी आना स्टार्ट हो गया. ठीक है. क्लाइमेट माने लॉन्ग एरिया, लॉन्ग पीरियड ऑफ Yes. टाइम. ठीक. नेक्स्ट. सर्वर प्लीज म्यूट योरसेल्फ. देन ठीक है, क्लाइमेट समझ में आ गया. व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट रिफर्स टू सम टोटल ऑफ weather conditions and variations over a large area for a long period Long period of that is time. more than 30 years. 30 years. That is known as climate. समझ में आ गया? Clear? Climate क्या है? Yes, sir. Sum total of weather. Of weather conditions and variations over a large area of long period of time. More than 30 years. ये क्या है? Yes. Climate है. Now, Climate please है. read. Please come to the weather. What is weather? Please read. Weather refers to the state of the atmosphere over an area at any point of time. No. The Over an area. elements एक मिनट. Atmosphere क्या है? What is atmosphere? What is atmosphere? Atmosphere बोले क्या बोलते हैं? You are making your notes, right? Notes बना रहे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Atmosphere is envelope of gases. What is atmosphere? Envelope of gases. माने एक जगह पे क्या है? पूरे gases कॉन्सेंट्रेट हो जा रहे. एनवेलप कैसा रहता? बंद रहता एनवेलप, दो चार साइड से भी. ठीक है, राइट? व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज एनवेलप ऑफ गैसेस. सबसे मेजर इंपॉर्टेंट गैसेस क्या है? व्हाट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस? Oxygen, carbon dioxide, nitrogen. Envelope of gases, that is सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस ऑक्सीजन. उसके बाद Nitrogen. नाइट्रोजन. फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फॉर एटमॉस्फेयर. ऑक्सीजन क्या है? इट कीप्स लाइफ ऑक्सीजन है. नाइट्रोजन इज फॉर प्लांट्स and carbon dioxide is to keep our earth warm. ठीक है, to keep our earth warm, otherwise we would have become cold. Oxygen क्या है? Life के लिए है. Oxygen is for life. Nitrogen is for plants and carbon dioxide is for to keep the earth warm, otherwise we would have freeze. So what is atmosphere? Envelope of gas. Envelope of gases. Envelope of gases. कौन से Nitrogen. gases है? ऑक्सीजन, Nitrogen. एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो क्लाइमेट माने वेदर. Sum of total of weather conditions and variations over a large area for long period of time. क्लाइमेट माने वेदर, सम टोटल ऑफ वेदर. वेदर माने एटमॉस्फेयर. Conditions and variations बोल के याद रख ले सकते हैं ना, क्लाइमेट बोले तो. देखिए, क्लाइमेट माने वेदर, सम टोटल ऑफ वेदर. वेदर माने एटमॉस्फेयर. Atmosphere. ओवर एन एरिया. कौन सा? लार्ज एरिया नहीं, ओवर एन एरिया एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. एट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. सो एक चीज से याद है आपको. व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट सम टोटल ऑफ वेदर.
वेदर इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज एनवेलप ऑफ Atmosphere. गैसेस, वो एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे। समझ में आ रहा? यस और नॉट? Samara. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज रीड, कंटिन्यू। सीमा कंटिन्यू प्लीज। कहाँ से सर? कौन पढ़ रहे थे? सीमा पढ़ रहे थे ना? रेस्पॉन्ड नहीं दे रहे तो मैं आवाज दी। So, The इधर elements of पढ़िए पढ़िए पढ़िए। The elements, the element of weather and the climate are the same. That is temperature, atmosphere, pressure, wind, humidity, and perceptions. precipitation, Okay, sir. precipitation, Precipitation. ठीक है, precipitation, ठीक है। The elements of the weather and climate are same। क्या क्या है weather and climate के elements? weather and climate के elements क्या क्या है? फर्स्ट वन क्या है? टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या है? The amount of heat present. It is a measure of heat. Temperature is a measure of heat. measure of heat. Temperature is a measure of heat. Heat. ठीक है, और क्या है? टेम्परेचर मेजर ऑफ हीट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? Force, sir. Fourth by areas. प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स Force पर एरिया। by area. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर Force Area. exerted per unit area. फोर्स पर यूनिट एरिया। राइट, वेरी गुड। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एटमॉस्फेयर क्या है? व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है? A group of Envelope gases. of gases. एनवेलप Envelope ऑफ of gases. एनवेलप ऑफ Gases. Oxygen. गैसेस है। और व्हाट इज प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो खाली जगह दिख रही है आपको, ये जो एनवेलप है ना गैसेस का, ये इसका अपना वेट डाल रहा। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स। याद है तो आप लिख सकते प्रेशर इज इक्वल टू वेट। वेट एक्सर्टेड पर एरिया, ठीक है। इसका वजन रहता, ये गैसेस का वजन है नहीं है। Yes, sir. ये पहले वेट क्या नहीं है रहता सर इसका, जी? वेट नहीं रहता ना कौन सर बोले? इसका गैसेस का। कौन बोले? ये जो प्रेशर है, ये जो वेट है, एनवेलप है, एटमॉस्फेयर पे उन्हें वेट एक्सर्ट करता हूं, तो इसको बोल रहे हैं आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर। the pressure, the weight per unit area exerted by the atmosphere is known as atmospheric pressure. is known as atmospheric pressure, ठीक है। इसका पढ़ो wind. what is wind? wind क्या है? what is wind? what is wind? अर्शिया। Movement of air, sir. wind is what? what is wind? Movement of air. movement of air is known as wind. It always flow from high pressure to Low pressure. low pressure. इतनी चीजें याद रखो। और विंड से एक और एक चीज याद रखो, अगर विंड रिवर्स हो गई
विंड क्या बन गई, 1/W हो गई, तो ये क्या बन जाता, मॉनसून, नोन एज मॉनसून। तो अगर विंड इज मूवमेंट ऑफ एयर, इट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और ये विंड रिवर्स हो गई तो क्या बोल रहे हैं आप, मॉनसून। तो मॉनसून का डेफिनेशन क्या बन गया, रिवर्सल ऑफ winds, reversal of winds is known as monsoon। Monsoon. ठीक है, लेट अस मॉनसून नेक्स्ट पार्ट में आता अपना, बट ये याद रखो। और क्या है ये, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, Water vapor. Amount of water vapor present in air. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन, और यू कैन से Atmosphere. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी नहीं, वाटर वेपर भी बोलने के बजाय यू कैन से अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, Okay. amount of moisture Moisture. present in air, present in air is known as humidity। Humidity. समझ में आ रहा, Yes, amount sir. amount of moisture present in air is known as humidity। Hum- And what is precipitation, I mean, anything which falls from the sky, sir. Rain, snow. Mm. what is precipitation, precipitation माने it has come from the word precipitate, it comes from the word Precipitate. precipitate, precipitate माने नीचे आना, ठीक है, To down. पजरना, अगर if I say in Urdu, it is called as पजरना, पानी एकदम नीचे आते रहता। अगर पानी है, अगर आप ऊपर देखिए अपने छत पे, तो क्या हो रहा, छत में पानी है, नहीं है उधर कोनों में, है सर। कच्चा होगा ना होगा, उसको बोलते प्रेसिपिटेट, पजरना पानी, ठीक है। समझ में आ रहा, प्रेसिपिटेशन, precipitation is Yes, of sir. many types, normally the very common type is rainfall, very common type is rainfall। उसके बाद Fall. Precipitate. उसके बाद Snow. स्नो, स्नो, और कॉल इट एज स्नो फ्लेक्स। और ओले गिरे कभी, ओले गिरे हाँ yes, sir. देखे ना, देखे, हाँ सर गिरते, हाँ सर। तो क्या बोलते हैं, स्नो, और ओलों क्या बोलते हैं, Hailstorm. Snow. hailstorm, known as hailstorm, Hailstorm. ठीक है। So this is the common precipitation, rainfall, snow, snowflakes और hailstorms, ठीक है। Hailstorm. So these are the four factors of climate and variation, climate and weather, ठीक है। So what is climate, climate is the sum total of weather। what is weather, weather is the atmospheric, weather is atmosphere, atmosphere, उसके बाद में क्या होगा, then we have seen the what are the factors of climate and weather, कौन से factors है climate and weather, what is the first thing, temperature, it is a measure of Temperature. heat। second क्या है, atmospheric pressure, atmospheric pressure माने the weight exerted by the envelope of gases, then it is known as the weight exerted by the envelope of gases onto the atmosphere is known as atmospheric pressures, it is measured in millibars। temperature is measured in, what is the unit of temperature, Kelvin. temperature is measured in Kelvin, atmospheric pressure is measured in Millibar. millibars,
ठीक है, उसके बाद में ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, these are measured in millimeters. ठीक है, अब नॉर्मली आप यू माइट हैव हर्ड इन न्यूज़पेपर और न्यूज़ में आ रहा हूँ कि भाई 15 mm रेनफॉल हुआ बोलते. So what are the factors, what are the elements of weather and climate? Temperature, atmospheric pressure, humidity and precipitation. समझ में आ गया? So please continue reading. Sonia, are you there? Sonia. So please start reading from here. You may have observed that the weather conditions fluctuate every often even within a day, but there is some common pattern over a few weeks or months. That is, days are cool or hot, windy or cloudy Calm, or windy or calm. calm है वो, Calm. or calm, cloudy or bright, wet or dry. On the basis of these generalized monthly atmosphere conditions, the year is divided into seasons such as winter, summer, or rainy seasons. Such as winter, summer or rainy season. Seasons. So you may have observed that the weather conditions fluctuate very often, even within a day. So आज सुबह में पानी पड़ रहा, एकदम दोपहर में धूप आ रही, सुबह में पानी पड़ रहा, अब एकदम तो धूप है, Yes, sir. एकदम धूप आ रही, फिर पानी स्टार्ट हो गया, एकदम फिर क्लाउडी हो गया, तो क्या है, एकदम चेंज हो रहा. सो डेज आर हॉट, कूल और हॉट. आज का कंडीशन क्या है, सर्दी है गर्मी है? क्लाउडी है, थोड़ा क्लाउडी है, थोड़ी धूप है, थोड़ी पानी पड़ रहा है या ड्रिजल हो रहा? पानी पड़ रहा क्या? नो सर, नो नो नो, खाली हवा चल रही. ठीक है, ठीक है. उसके बाद में क्लाउडी और ब्राइट. क्लाउडी है या ब्राइट है? ब्राइट है थोड़ा. तो धूप भी है प्लस बादल भी है. वेट और ड्राई. ड्रिजल हो रही है, एकदम ड्राई है. ड्राई. वेट है सर, वेट. फिर जगह वेट है तो जगह ड्राई है. ऑन द बेसिस ऑफ these are generalized monthly atmospheric conditions. ठीक है, generalized monthly atmospheric conditions. The year is divided into, what are those? Winter, summer, rainy. Winter, summer और rainy. तो सबसे पहले आपको क्या आता, समर पढ़ना है. ठीक है, पहले सबसे पहले समर पढ़ते, फिर उसके बाद में रेनी सीजन आता, फिर उसके बाद में सर्दियां आती. ठीक है, तो समझ में आया? सो व्हाट इज क्लाइमेट एंड वेदर? व्हाट इज क्लाइमेट? कैन यू समराइज व्हाट इज क्लाइमेट? Climate is sum Sum total of of large area plus long period greater than or equal to 30 years. Climate. ये क्लाइमेट है. व्हाट इज वेदर? वेदर क्या है? एटमॉस्फेयर. Weather is a state of atmosphere over an area any point of time. क्लाइमेट माने एरिया भी है. देखो, क्लाइमेट में भी एरिया है, क्लाइमेट में भी एरिया है, वेदर में भी एरिया है. क्लाइमेट में भी टाइम है, वेदर में भी टाइम है. क्लाइमेट में बड़ा एरिया है और ज्यादा टाइम है. वेदर में पर्टिकुलर एरिया है और कौन से भी एक पॉइंट पे. ठीक है, समझ में आ रहा? एलिमेंट क्या है? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट? समराइज प्लीज. टेम्परेचर, atmospheric pressure, Temperature, Wow. atmospheric pressure, wind, humidity, and precipitation. Elements of weather and climate. What are the elements of weather and climate? First one, temperature. Temperature.
केल्विन। उसके बाद टू क्या है? Atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर सेल्सियस में भी होता ना। ऐसा यूनिट, Millibar. स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? Mul- एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन बार्स, इन बार्स। Bars. थर्ड क्या है? ह्यूमिडिटी। Humidities. Wind नहीं है sir. फोर्थ वन विंड। फिफ्थ वन क्या है जल्दी? Precipitation. प्रेसिपिटेशन। Precipitation. प्रेसिपिटेशन। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। समझ में आ रहा? और लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स क्या है? व्हाट आर लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस? व्हाट इज द लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस? क्या है लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस? कूल और हॉट, नहीं विंड cool और और hot. विंडी और काम, क्लाउडी और Cloudy ड्राई, or bright. वेट और ड्राई। Wet or dry. क्या बोलते? बेसिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। और इसके बेस पे क्या आ रहा है आपको? विंटर, समर एंड Summer. रेनी सीजन सारे। ठीक है, समझ में आ रहा? तो क्लाइमेट क्या है? व्हाट इज क्लाइमेट? व्हाट इज क्लाइमेट? Some large area, long period, greater Sum than equal to total. 30. सम टोटल ऑफ वेदर। उसके बाद में Condition. Condition. सम टोटल ऑफ वेदर, Condition and लार्ज एरिया Condition. एंड लॉन्ग पीरियड period ऑफ टाइम। greater than or वेदर क्या है? वेदर क्या है? व्हाट इज वेदर? सम टोटल Atmosphere. ऑफ atmospheric conditions. Sum total of atmospheric conditions, particular area and any point of time. ये याद रखो, कीवर्ड्स में याद रखिए। if you remember in keywords याद रहता। Clear? yes sir. What are local atmospheric conditions? Day or cool, cool or hot, windy or calm, cloudy or bright, wet or dry. Local atmospheric conditions. What are local atmospheric conditions? फिर से बोलिए। Cool or hot, Cool or hot, windy or calm, windy or calm, cloudy or bright, cloudy or bright, or wet or dry, wet or or dry. 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 ठीक है, ये क्या है? लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है। So based on this local atmospheric conditions, what are classified? Winter, summer, rainy. Based on local atmospheric conditions, Yes sir. seasons are classified. Seasons are classified. What are those? Classified. Winter, पहले कौन सा सीजन आता? summer, समर। उसके बाद winter, उसके बाद रेनी। rainy. Rainy, sir. उसके बाद सर्दियां। Just winter. विंटर। समझ में आ रहा? So based on this thing,